Shanta? Okay, अच्छा. So assignments already आप लोगों के आएंगे हैं, तो अनीता मैम will check that. ठीक है. इसके अलावा द थिंग इज आपको इन लास्ट सेशन आपको उन्होंने बोला था कि फाइंड सम जर्नल क्वेश्चंस बेसिकली यू आस्क्ड इन इंटरव्यूज, राइट? हैव यू डन दैट? बिग नो. पता नहीं क्यों मेरे को एक्सपेक्टेड था ऐसे आने वाला है. आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ओनली. चलो, एनीबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम सलमान ये था, बिकॉज आई कैन सी देम. इफ दे डोंट इवन रिस्पॉन्ड आई कैन सी देयर फेसेस. एनीबडी एल्स? don't want to disappoint you इसीलिए ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. चलो ठीक है. चलो, ओके. जस्ट फ्यू रैंडम क्वेश्चंस. स्टार फॉर्मेट क्या होता है इंटरव्यू का? एनीवन? Ma'am, sir, starts from situation, task, action, and R stand for STAR. I forgot the R's. थोड़ा सा keep in mind. Uh, आर फॉर एनीवन? कोई maybe कॉम्प्लीमेंट करना चाहता है? आर फॉर response, sir. Response, maybe रिस्पॉन्स और रिजल्ट. result, yes, sir. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. एडिशनली हमें कौन कौन से सेगमेंट को टच करने चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू? एनीवन? Background, गो अहेड. skills, ओके. maybe means skills both technical, what I remember from the last class. मुझे दो ही याद है सर. The experience, sir. Experience and competencies. Experience, हाँ, that experience can Competence. be counted, yes. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. कल्चरल फिट. yes cultural fitness. एडिशनली उनके कैरेक्टर्स को भी जज करना. वो एंड that हाउ means it comes under assessment test. and additionally there is an important thing you all guys are missing right now: psychometric test. Uh, बीच में उन्होंने एक नाम भी मेंशन किया था. एनीवन रिकॉल है किसी को? राजीव राजीव तलरेजा एंड अदर बिजनेस मैग्नेट्स. अच्छा, आई वाज नॉट इन द सेशन. सो अभी कशिश मैम आप सारे लोगों के असाइनमेंट्स चेक करेंगे जिन लोगों ने ग्रुप में भी शेयर किया है. देन वी विल कम टू द प्रैक्टिकल पॉइंट, कैसे इंटरव्यू लेते हैं. आज हम उस चीज को देखेंगे. ओके. So I was about to see the like assignments. I can see like these are the majorly parts जो अनीता मैम ने assignment देखे हैं, मतलब दिए हुए हैं. From my end it's already completed. बस EVN वाला हम लोगों ने करा था. Sorry, EVP वाला किया था, तो mostly everyone I checked through, है ना, जितने भी main थे. So I already checked through that. So apart from that, we can start with that the practical session. So what we have planned for today is हमने सोचा था आप लोग थोड़े क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आओगे, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. कल की क्लास के लिए हैव टू बी कि अभी हम क्या कर लेते हैं, वी कैन डू अ मॉक सेशन इन विच यू एवरीवन विद द पेयर ऑफ दैट कि आप लोग एक दूसरे का इंटरव्यू लोगे. ठीक है? डोंट बी हेजिटेट. आप अच्छे एचआर हो, आप ऑलरेडी थ्योरेटिकल कर चुके हो. ठीक है? So the thing is, what you will do is we will have a mock sessions कि आप लोग कैसे करोगे. After that, we can guide you out कि what steps or what steps you have to be follow while taking the interview. Then in tomorrow's sessions, we have a proper set of questions like whatever the interview will be held in. For example, a technical interview or skill based or behavior based interviews. Like we have to set format of questions will be there. You have to prepare of. Then we can take a proper session or one-to-one interview session, so that it will can help you out also how you will take the interview and how you can also give the interview. Okay, what are the questions may be asked while taking the interview, right? Obviously it's a very good thing कि आपको interview देना लेना आता है. It's very easy. Probing करना बहुत आसान है. ठीक है? But when it comes to give the answers, we somewhere lack.
बिकॉज इन रिक्रूटमेंट पार्ट मेजरली वो आपसे एक मॉक करा लेंगे कि ठीक है आप हमसे प्रोबिंग करो, यू नो दैट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बट व्हेन वी डू इन द प्रैक्टिकल फॉर्म, जैसे मैं प्रोबिंग करती हूँ, लाइक आज के सेशंस में हम लोग क्या कर लेंगे मेजरली, कि आप एक दूसरे से इंटरव्यू लोगे, यू विल डू द प्रोबिंग सेक्शन। इन द टुमारो क्लास आई विल प्लानिंग कि हम लोग ऐसा लें कि क्या रिक्रूटमेंट कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड व्हाट सेट ऑफ क्वेश्चंस यू शुड रिप्लाई ऑन। ओके, सो हमने जो भी फैंसी वर्ड्स यूज करे हैं, how you will use this the fancy words in your interview. Okay, so this is all about today's session and tomorrow's session. It will be very helpful and I really want that everyone should be participate in that because major part आपका यही है। At the end अगर आप सोचोगे ट्रेनिंग का जो भी आप एक to Z internship लेते हो, the main role part is to yours how you will answer the interview questions or how will you do the probing with the candidates you will gonna select or make it up. Okay, so Prashant sir, are you there? You're on mute. Oh, so sorry. So sorry. Yeah, I'm here. Yeah, so what So I'm thinking is we can do a pair thing, right? In the last batch we also do that. कि हम लोगों ने pair कर लिए थे, but let's see who are active right now. That is must. I don't want that कोई participate ही नहीं कर रहा है तो it's not, हम जबरदस्ती force नहीं कर सकते ना. I कर तो want कि सक we should, कर तो सकते हैं, मैं तो करूंगा but यहाँ पे अभी। yeah, मतलब I'm not saying like कि कर सकते हैं करो, but if they don't revert, I don't think so. We should give a fruitful time to them who are much more participated. I don't want to waste my time on people who are not even interested and just sitting for the attendance part of it. Okay, because that's what the main thing of the training is, right? कि जितना हम fruitful कर सके, so why we should waste our time to calling them names. Okay, let's see active participation first. What about Rashika? Are you there? Kavya? Oh, yes, ma'am. Okay, Kavya, you are there. Bishanjit De, Yes, are you ma'am. there? Okay, Rashika, you're also there. Yes, अब ma'am. स्ट्रिक्ट होगी ना मैं थोड़ी, अब आएंगे। ठीक है। Okay, what about Swati? Yes, ma'am. Yes, okay. Priyanshi, Yes, ma'am. Preeti, Akash. Yes, ma'am. Okay. What about Akash? थोड़ा सा टाइम दिया करो, अनम्यूट करने में टाइम Yes, ma'am. को। Yes, ma'am. नहीं, I want active participation fast. बहुत स्लो हो चुके हैं, बहुत डील छोड़ दी हम लोगों ने। इनका साबुन स्लो है Okay. बिल्कुल। जोक्स आर अपार्ट। Okay, Akash. Okay, Akash said it. Pranjali. Yes, ma'am. Okay, Sonam, Yes, ma'am. Likita, Harshit, and I'm not able to pronounce that name. I don't want to pronounce it अय्यप्पन wrong. अय्यप्पन University of Madras. अय्यप्पन and Lakita, the two guys are not responding. Yes. Tick 3, tick 2, tick 1. Okay, time over. Wow. Well, you have given more time, na? Chalo, what can I do is we can start. ओके चलो चलो, so सबसे पहले इंटरव्यूअर बनाते हैं सलमा मैम को, Okay. एंड देन द कैंडिडेट विल बी यथार्थ itself. Yes, I was also going to pick him because he texted me yesterday. That's so nice. And the profile is for कौन सा प्रोफाइल होगा? यथार्थ बैकग्राउंड क्या है आपका? So BHM, hospitality sector. Wait, Ayyappan, you are eligible. We have Sir. noted it. We have I noted think it. mic problem. No issue, no issue. How is correct? Actually, phone problem, I think so. Okay. So see, अभी करना क्या है? Just I'm going to tell you. There is one person who is going to play the role of interviewer. Another one is for candidate. And for all the guys who is monitoring, you have to tell 2 points for both of them, as like for candidate 2 and for the interviewer 2. 2 points आपको बताने हैं, और 2 points में क्या होंगे? One is the good thing and the another is for the feedback. So ये मुझे सबसे चाहिए. So active होके सुनना. Either we have another option. I'm not going to use the harsh language, but this is a thing. We need active participation. So एक
गुड पॉइंट, एंड दूसरा फीडबैक पॉइंट आई नीड फ्रॉम ऑल. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. सो Yes. अभी या यथार्थ, कैन यू रिपीट योर बैकग्राउंड प्लीज, सो मैं कोई एक रोल बता पाऊँ आपके अकॉर्डिंग. Hospitality sector, sir. आईटी, Hospitality sector. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. चलो ठीक है. सो सलमा, प्रोफाइल होगा इनका, व्हाट आई कैन से, रिसेप्शनिस्ट मैनेजर इंटर्न पे. ठीक है, जैसे कोई एक मैनेजर ऑलरेडी वर्किंग है एंड ही हैज टू असिस्ट देम. ठीक है, तो प्रोफाइल ये होगा. जस्ट टेक योर टाइम. यू आर द इंटरव्यूअर एंड ही इज द कैंडिडेट. So assistant manager, receptionist, intern. हाँ, इंटर्न पे. Any other details like क्या देख रहे हैं हम? हम ये देख रहे हैं कि असिस्टेंट जो अभी मैनेजर हैं उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट एडिशनली उनके एब्सेंस में अगर कोई काम होता है या फिर किसी क्लाइंट से फ्रंट टू फेस डील करना है तो वो भी ये कर पाए. एंड एडिशनली इनके साथ जो इनका सीटीसी होगा वो एज एन इंटर्न 3.6 LPA. ठीक है. वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है स्ट्रिक्टली, एंड रोटेशनल ऑफ होगा, संडे ऑफ नहीं होगा. Additional of and the location? लोकेशन यू कैन से मुंबई इटसेल्फ. कहाँ से, श्रीनगर से हो यथार्थ, हाँ, कहाँ से हो आप? श्रीनगर से ही. श्रीनगर से. चलो घर का लोकेशन दे दिया, श्रीनगर से. So we are looking only for B, उनका कुछ अलग सा होता है ना. What is your background? Like you चलो, did some hospitality sector में आपका होता है ना. ग्रेजुएशन होता है Yes, इनका. BHM, graduation. बैचलर्स ऑफ BSM, होटल मैनेजमेंट. hotel management. Kassis is offline for the interview preparation. No, sir. I'm just. चलो. Please allow me couple of minutes, please. श्योर श्योर, ऑफ कोर्स, कोई इशू नहीं है. इतने देर में यथार्थ को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा ताकि वो सारे क्वेश्चंस को अपने माइंड में मेकअप कर पाए, है ना यथार्थ? Yes, sir. ओके. एनीवन फ्रॉम यू, किसी ने अभी तो कोई इंटरव्यू दिया है? हैड यू गिवन दैट इंटरव्यू एट समवेयर? अच्छा, आपने दिया नहीं, आपको छोड़ के. आप दोनों तो अभी फिलहाल अभी आप रोल प्ले करने वाले हाँ हो. सर, अभी मैंने आपके दिया है, मैंने प्रिपरेशन दिया है कर रहे सर. हो आप लोग, ठीक है? वन बाय वन. I've given the interviews. कशिश. ओके. मैंने दिया है मैथ्स सर। ओके ठीक है. और सर एनीवन? मैंने भी दिया है. सर मैंने भी दिया है. सर आई एम ऑल्सो। आई एम ऑल्सो. एक तो प्रीति और दूसरा कौन है? सर मैं प्रांजलि. ओके, प्रांजलि. ठीक है. सर ओके. मैंने भी दिया है. आकाश ने भी दिया है. ओके. एनीवन एल्स? ये किसी ने अभी एक्टिव इंटरव्यू पार्टिसिपेशन किया हुआ अभी रिसेंट लास्ट 3 मंथ में? नो वन. चलो ठीक है. कैसा था इंटरव्यू? इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ इज इट? अच्छा था सर। अच्छा था मीन्स. ओके, अगर आप सेल्फ असेसमेंट में जाओ तो क्या लगा था कि वहां पे क्या इम्प्रूव कर सकते थे खुद का? सर इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है. अच्छा अच्छा, वो तो चलो ठीक है. दैट लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. समवेयर आई जस्ट सीन अ वीडियो जहाँ पे कि मुझे दूसरे साइड का भी पर्सपेक्टिव पता चला था. इंटरव्यूअर टू वांट्स टू हायर द कैंडिडेट. ठीक है, अगर आप किसी कॉल सेंटर या ऐसे प्रोफाइल पे नहीं है जहाँ पे कि लैंग्वेज इज द बैरियर, सो उनके मन में भी ये होता है वी नीड टू हायर अ गुड कैंडिडेट. सो लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू कन्वे योर थॉट्स. यू हैव नॉट देयर टू इम्प्रेस बाय द इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर. सो यार, आपको आना बहुत ज़रूरी है, बट अगर उस तरीके का प्रोफाइल नहीं है देन ऑफ कोर्स दे कैन कीप यू. चलो सलमा मैम, क्या आर वी रेडी? ओके, Yes, sir. गेट सेट गो. ऑल द बेस्ट. Thank you, sir. Ata, you ready? Yeah, I'm ready. Perfect. So, hello, good afternoon. I'm speaking to Yatharth. Yes. Hi, Yatharth. I'm Salma calling from XYZ company. So this call is regarding your like internship opening for an assistant manager receptionist. So is now a good time to talk?
Yes, this is a good time to talk with you. Perfect. So, Yatharth, I just want to tell you that this is an internship opening with XYZ company, and but this is a paid internship. We'll be getting into the details very soon. But first, I would like to understand about yourself. Could you please brief me about yourself? Okay, so first of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Yatharthati, and I'm currently pursuing Bachelor's in Hospitality Management from Central University of Uttarakhand. And along with my academics, I've created a strong interest in hospitality sectors, and I've starting as a front desk receptionist and moving into the guest relation management. And my experience include handling reservation, handling guest complaints, and working with different peoples around the globe. Okay. So, like you were introducing during your interaction, you have told me that you worked as a front desk receptionist and then you were handling client. So, have you ever worked anywhere? So I've done my internship, or you can say the industrial training in Mm-hmm. Fairfield by Marriott, that is Dehradun. Mm-hmm. There So, I handle the guests. so why you already did an internship? Why do you want to again get into an internship which will be for certain time, like 3 to 6 months? Why? So it's in our curriculum. So like we have to do the 6 month internship in the Okay. industry to get knowledge about the more departments in the hotel. Mm-hmm. Okay. So, may I know which location are you from? So I'm from Srinagar Mm-hmm. currently And like, have you, pursuing. sorry? So I'm from Srinagar. Mhm. Okay. So, Yata, recently, do you have any examinations coming up, or like, do you need time for the preparation, anything like this for the next 3 to 6 months? So no, I don't have any examination. So you have completed your like you received the certifications as well, right? Yeah. Okay. So I'll be talking about like the role which you will be working about. Like, so we already have a receptionist manager working with us, and then he's like overloaded and we want an intern to help him supporting with the documentation, and then it will be like you have to face clients sometimes as well. So how Okay. comfortable do you feel when you have to convince a client who is like very aggressive at certain points, that? So as per me, I will just, if the guest come and he is aggressive, first of all, we must have to know about the how to handle the guest. So I just clearly listen the problem for him, and then after that, I'll just say sorry anything to him for any problem what he have faced. Then after that, we'll cover the problem as soon as possible and give the compliment for the guest. Okay, so but always compliment we can't bear. So you have to look after sometimes. Yeah. Yeah. So I also want to understand that, documentation, it takes a lot of paperwork, when the client check-ins and check out, you have to take the documentation. And there'll be different sort of things like you have to sometimes look at the buffet or all these things. So how would you manage doing the documentation? Let's say if you had to do the documentation for a certain length of 1 week, will you be still that motivated, and what keeps you motivated for the documentation? So during peak times, I'll prioritize my work Mhm. along with my documentation work. Okay, Um, perfect. So and also I would like to mention that this will be a work from office, and it will be a rotational shift. Will you be comfortable with the rotational shift? yeah, I'm comfortable. And I also mentioned you that this will be a paid internship, and this will be like 3.6 LPA. Is it okay with you, or Yeah, do okay. you want any other benefits you are looking into? Anything else? No. No, so you don't want any benefits. So it's off from us. Okay. So Yata, I also want to understand how soon can you join? So I can join from next month. Next month. Okay. And why, like, are you serving anywhere, or like you have examinations? I have quite examination, one examination left. Okay. Perfect. And also,
I'll be forwarding your CV. I'm pretty much impressed with your resume, and I'll be forwarding your CV to the next level. So you'll be having an face-to-face discussion with the hiring manager as well, and then we'll go forward with it. Yes. Sure. So Sure. anything else you would like to ask me, or any queries you have? So I will not talk about the location. Mm-hmm. So as I Where the mentioned, location? so this location will be in Srinagar only. So it's your home Okay. location. So I hope it won't be any issue. No, Yeah, no perfect. problem. Anything else? No, ma'am. It's No, okay. okay. Perfect. So you'll be receiving, please look after your email. So either we'll be sending you a link for this further round or any assessment we are planning. So we'll be sending you through email. Please look after your email as well. And that's it from my end. Anything said no, right? Yes. Yes. So yes, it was nice talking to you. Have a great day, Yatharth. Bye-bye. Thank you. Yeah, complete. So now it's a public time. फटाफट मुझे एक एक पॉइंट एक जो अच्छा लगा आपके अकॉर्डिंग एंड द अनदर पॉइंट विच इज फॉर फीडबैक. So go fast. We had to cover all the persons or all the Hello. interns Hello, here. sir. Yes. Hello, sir. Yeah, Pranjali, go ahead. सलमा मैम एज गुड, उन्होंने अच्छे से इंटरव्यू लिया, उनका बहुत अच्छा लगा मुझे. एंड यथार्थ का भी अच्छा था, बट उसने सेल्फ इंट्रोडक्शन में एजुकेशन मस्ट था. एजुकेशन उसने स्पीक नहीं किया कि 10th का हुई 12th का हुई, एजुकेशन कहाँ से किया, वो उसने करना था. That. ठीक है, अब दोनों के लिए एक फीडबैक पॉइंट बताओ जल्दी जल्दी जो उनको इम्प्रूव करना है. वही सेल्फ इंट्रोडक्शन में उसने बैकग्राउंड नहीं. अच्छा, बैकग्राउंड नहीं बताया, चलो ठीक है. हाँ. हाँ. ओके, एनीवन एल्स, कोई और आ रहा है? सर हाँ आकाश बताओ. सर जैसे कि सलमान मैम ने बताया हुआ कि हमें हमारे पास ऑलरेडी एक एचआर मैनेजर, मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक रिसेप्शनिस्ट है मैनेजर, तो ये नहीं बताना था. तो क्यों नहीं बताना चाहिए था? तो सर मतलब हम तो नहीं है, मतलब इंटरव्यू ले ही रहे हैं, मतलब उन्हें वो तो वहाँ आएंगे, जब सिलेक्ट हो जाएगा तो मासी मालूम पड़ जाएगी वहाँ है कि नहीं. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू असिस्ट समवन, यू आर नॉट गोइंग टू टेक द कंट्रोल कंप्लीट चार्ज. सो जी सर. दैट इज अ गुड थिंग. उन्होंने बताया, अच्छा किया, दैट्स अ गुड थिंग. कोई फीडबैक? नो सर, मैं ही गलत हो गया. सर मुझे लगता है कि स्किल या कुछ उनमें ऐड करना चाहिए था, जिससे ये कंपनी के सक्सेस में थोड़ा अच्छा हो, इसलिए. ओके, चलो, स्किल्स से रिलेटेड एक क्वेरी था. आई नो, मैंने वो ऑब्जर्व किया है, मेरी साइड से पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई है, तो मैं बाद में आऊंगा. एनीवन एल्स? कशिश, स्वाति, काव्या, प्रीति, सोनम, हर्षित, अय्यप्पन, राशिका. Sir, from me, Salma ma'am was awesome. Like it was really really good from my end. ठीक है, because I have been giving the interviews, तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था. मतलब she was asking every single question that an HR should ask. तो वो उतना Okay. अच्छा गया. For Yatharth, I would say he was good with things, but if he would have added some skill point, तो उसका highlight हो जाता. And also अगर उसने पहले internship करी है, for example, मैम ने question किया like when are you planning to join, right? He said a month. तो मैम वहां पे हो सकता है उसकी प्रोफाइल थोड़ा, और ही स्टेट समथिंग दैट ही इज वर्किंग समवेयर, और या कुछ भी थोड़ा हाईलाइट कर देता. बिकॉज क्या होता है ना सर, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व ओवर गिविंग द इंटरव्यूज, अगर आप 1 मंथ का स्पेस देके बोलते हो और कहीं आप काम नहीं कर रहे हो या नोटिस पीरियड में नहीं हो, तो जनरली आपकी प्रोफाइल हटा दी जाती है. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. तो अगर हम 1 मंथ बोलेंगे ना, तो इट इज गोइंग टू बैकफायर फॉर अस. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व. तो कभी भी एचआर को आप ऐसे नहीं बोलो कि मेरे एग्जाम से तो 1 महीने बाद कर रहे हैं. इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन से नो, आई एम अवेलेबल टू जॉइन एज सुन एज पॉसिबल, राइट? सो let them take you to the second round. So that is one of the thing I figure out कि यथार्थ को मतलब as an interviewer मतलब sorry interview person उन्हें नहीं कहना चाहिए. That would be my feedback. चलो यथार्थ, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. This will have mock interview will be helpful. Kashma, any point? Yeah, agree with
But yeah, first thing, take it as a feedback positively. It's not about pointing to you out कि कोई negative है. Take it positively because how many points of views आते हैं ना, सबका अपना way है. You know, everybody is giving you this सबने interview दिया, right? Somehow or reason of life. So they know that कि हाँ हम लोग कहाँ lack हुए थे and really don't want कि वो सामने वाला भी वहाँ lack हो. राइट सो एवरीवन जो भी इंटरव्यू फीडबैक आप लोगों को मिलेंगे टेक इट वेरी पॉजिटिवली because it will be definitely fruitful for you for the future because it will definitely knock out कि हाँ मेरे को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की नीड है. So my thing is, Salma, you did it very well. The flow, the questions dropping, it's very good. It's looking very professional. As already Kashish said, most of the points are already set, right? कि आपने probing बहुत अच्छा किया है. So the thing is, first of all, for Salma, my feedback is try to specify not कि पूरा चीजें clear ना करो आप in the first round. Try to be very not a very lengthy interviews because I know it's not specified with you कि first है या second round है. But क्या होता है कि majorly when we are connecting on calls, right? So it's very kind of like कि इतना long lengthy में probing चलता है. Because I usually feel when you are connecting on calls, it is specified but when you try to listen those things, like if I'm thinking, yeah, Yatharth is lagging in skills, yeah, so maybe I can do कि मैं उसको food bag पे पीछे रख लूं as an option, but try कि it's short and simple because I don't think so. You will get time to give one on call 20 minutes, right? 15 to 20 minutes on call to like cover up all those things. So my feedback is try to be crisp, but try कि आप main major parts जो आपको mainly एक रिक्वायरमेंट है वो आप उनसे कैंडिडेट से ले पाओ. तो दिस ऑल फीडबैक फॉर एवरीवन कि आप कोशिश करो ऑन क्वाल इफ यू आर ट्राइंग टू कि आप क्रिस्प पॉइंट जितना पूछ पाओ व्हाट देयर एग्जैक्टली दे आर कॉन्फिडेंट व्हाट दे वर डूइंग. क्योंकि बिकॉज इफ वो कहीं भी झूठ बोल रहे होंगे ना यू विल कैच अप ऑन द कॉल कि हाँ वहाँ पे वो लैग करें दे कैन स्टक इट आउट कि हाँ यू विल गेट टू नो बिकॉज उसके बाद तो इंटरव्यू में आप पूछ ही लोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है व्हाट आर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव. The first, always initial interviews, always see what is the background, what are the confidence of person is. Are they able to like communicate with each other, or are they able to understand कि मेरा क्या role रहेगा. So my main point is initial first interviews में try to be short and crisp. Majorly, you have to basically check what communicate a candidate is. ठीक है एग्जैक्टली उसने जो लिखा है वो झूठ तो नहीं लिखा है ना कि एग्जैक्टली वो क्लियर तो है जैसे कि यथार्थ वाज टेलिंग अबाउट द इंटर्नशिप. So that probing is good. कि आपने पूछा कि why are you doing that internship or you want to why do you want to switch it out. So these are the important things, right? So this is all me. Salma is very good. Probing part I really loved it. Seriously मैं सुन रही थी ना मैंने बोला okay probing हो रही है. It was good. So Yatharth, it was really good while listening to you. You are very clear with your like words. ठीक है. I know ये first time हो सकता है mocking में भी time लगता है. You know I can understand थोड़ा lack हो जाता है. But it's totally fine. You know it makes you better after you are practicing these things. My point of view is कि हम ना कोशिश करो like इन आप घर पे भी you try to do practice कि मेरे को formation कैसा रखना है. It's for everyone. कि हमें फॉर्मेशन सेट कैसा होता है जैसे मेरे को फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट रखना है देन आई हैव टू टॉक अबाउट माय एजुकेशन देन आई हैव टू टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस. तो ये चीजें क्या आती है प्रैक्टिस के साथ आती है यू नो व्हेन यू डू डेली प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरव्यूज की मेरे को क्या सेट रखना है तो फिर ना आप अपना वो रट जाते हो. देन यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ट्वाइस और थ्राइस इन द इंटरव्यू वाल थिंकिंग अबाउट कि हाँ मेरे को ये बोलना था. तो यू नो व्हाट ये वो क्या होगा कि जब आप इन चीजों के बारे में बोलोगे ना तो ये सेट ऑफ कि हाँ मैंने स्किल्स भी बता दी एक्सपीरियंस भी बता दिया अपना एजुकेशन फैक्टर भी बता दिया. राइट तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल इन लाइक टुमारो क्लास एज वेल कि हम कैसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस या सेट ऑफ फॉर्मेशन रख सकते हैं कि आप कोई पॉइंट आउट मिस ना करो. एट द एंड आपकी तरफ से एक आप एक ओपन बुक हो जाओ फॉर एन लाइक इंटरव्यूअर. ठीक है चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड यू डन डिड वेरी वेल. ऑल गोस टू प्रशांत. चलो ओके, दैट्स अ लवली पॉइंटर्स. सो मेरे दो पॉइंट्स तो एक कशिश मैम और दूसरे कशिश दोनों ने ले गए, ये दोनों ले गए. चलो फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स आते हैं मैं उस पर आता हूँ. सबसे पहली चीज, आपने एक क्वेश्चन किया था यथार्थ से कि हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द कस्टमर. सो जस्ट इसको ना थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना था एज लाइक यू आर द पर्सन, योर मैनेजर इज एब्सेंट, यू आर द पर्सन हु इज हैंडलिंग द रिसेप्शन. ठीक है. सर्टन क्या होता है, देयर इज एन ग्रुप ऑफ पीपल और देयर आर 2 or 3 पर्सन हु हैज ऑलरेडी टेकन द बुकिंग फ्रॉम आवर होटल और उनको अच्छा रूम नहीं मिला
and they are very angry. They are just like, just give me the refund. और फिर इस सिचुएशन में क्या करोगे? सो क्वेश्चन इज द सेम, और पूछने का तरीका इज डिफरेंट. Additionally, as an intern, there is no need to expose the CTC. Simply, you can ask, okay, Yatharth, you have just completed your 3 month internship, which is required by the college itself or university itself, and that mostly 95% केसेस में होता है, that is unpaid in nature, क्योंकि वहाँ के जाके आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेना होता है. So mostly 95% will be unpaid in nature. So directly you can ask, so what's your expectation that this profile is for the internship? So आप यहाँ क्या expect कर रहे हो हमसे? Maybe he is the person. See, you are the person there who have to done the cost cutting too. ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना है. ठीक है, that's an unfair thing, but of course from the perspective of business or from the perspective of your organization, you have to take care of. So अगर आपने पहले ही expose कर दिया that we have a budget of 3.6 LPA, और अगर यथार्थ को उतना एक्सपेक्टेशन नहीं भी होगा, देन अंदर अंदर ही इज लाइक ओ माय गॉड. ठीक है, एंड बाकी तारीफ करने के लिए तो इन दोनों ने बहुत तारीफ कर दी. द सेम थिंग गोज फ्रॉम माई साइड. स्ट्रक्चर था, दो तरीके से इंटरव्यू होते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में. या गाइस जस्ट बी ऑन अ मिनट, एक इमरजेंसी कॉल है, तब तक कशिश मैम आप हैंडल करो. आई विल बी बैक सून. सो फीडबैक कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आप लोगों को मिल गया है, एंड आई रियली वांट कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा मॉक इंटरव्यू यू विल गाइस रॉक, राइट? सो द थिंग इज ऑब्वियसली सीटीसी हम लोग नहीं पॉइंट आउट करते हैं, बट मेनी ऑफ द इंटरव्यूज क्या होता है, जब लॉन्ग इंटरव्यूज लेते हैं या ऑन कॉल इंटरव्यूज लेते हैं, तो मेजरली पार्ट में पीपल आस्क कि दिस इज माय ऑलरेडी. अब जो एक ऑब्वियसली आप ही देखो, कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो ऑब्वियसली आप उससे ये थोड़ी ना पूछोगे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. वो ऑलरेडी उसने मैंने वो कर रखा है कि ऑलरेडी वो 5-6 years का एक्सपीरियंस्ड है. यू ऑलरेडी नो दैट. ऑब्वियसली उसको एक हैंडसम पैकेज मिल रहा होगा, राइट? तो यू विल नॉट एक्सपेक्टेड कि आपकी क्या है. तो दिस आर द रिक्वायरमेंट्स वी हैव अ सेट ऑफ बजट्स. तो व्हाट आर एक्सपेक्टेड, डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आप मैच करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स सी नेक्स्ट किस पे जा सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच यथार्थ एंड सलमा. Okay, so Kashish and Kavya, are you there? Kavya, are you there? Yes, ma'am, but I'm in college. Okay, you are in college. Okay, no problem. Swati, are you there? Swati? Yes, ma'am. So, okay. So, are you able to give the interview? Ma'am, I'll try. Okay, okay. So, Kashish, you're gonna take the interview of Swati, and Swati. So, basically, you can both start. Okay, I'll give you the position first. I really want कि मैं आपको एक as a HR. Okay, what Swati आपका background क्या है? What Ma'am, exactly background you have in your education? ma'am, I have done BCom, but I am interested in management field. Okay, you are interested into HR. So what Yes, can we do, Kashish? As a practice also, Swati, we gonna position for the HR only, right? उनको ये क्या होगा कि they can help you out कि why you want to switch into that career. So he like she also get a chance to कैसे answer कर पाए. ठीक है? So Swati has already like applied for the position of HR. Okay. HR executive कर लेते हैं, not much a role of that कि experience हो गए. एग्जीक्यूटिव का रोल दे देते हैं. ठीक है कशिश? बजट कैन बी फॉर्म फर्स्ट. तो बजट हमें मेंशन ही नहीं करना है, फिर भी इन सेट ऑफ माइंड्स यू कैन टेक 3.5 LPA. ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद दैट. Just allow me a minute. Okay, Okay, let me just for sure, for because sure. it's the first, because I've given a number of interviews, but I haven't Yeah, never taken it. That's the new yeah, experience for me. yeah. Okay, all right. Okay, take your Ma'am, take it's your going time. to be means the scenario is like it's going to be the first round of the call, right? Yeah, I'm just going to connect with the person. yes. Swati, are you ready with this? yes, ma'am. I just want to start. I'll just go with the flow. Okay. All right. Okay. Okay. So good afternoon. Good afternoon, ma'am. Am I speaking to Swati? Yes, ma'am. All right. Swati, I'm Kashish. I'm speaking from XYZ company. Is this a good time for a quick chat about the job that you applied for? Sure, ma'am.
Okay, so I got your profile from one of the websites, and you have applied for the position of HR executive at our company. Yes, ma'am. All right. So great. So this will be a short call. I will just take 5 minutes about your time, just to understand a little better about you and your interest in the role. Does that sound good? Yes, ma'am. Okay. So can you just tell me a little bit about yourself? Yes, ma'am. Thank you for giving me this wonderful opportunity to introduce myself. My name is Swati Singh, and I have recently completed my graduation in the field of BCom from Lucknow University, and I have completed my 10th and 12th from Maharshi Vidya Mandir Public School. Currently, I want to secure a job position where I can gain experience and enhance my skills in the management sector. Okay. So may I know what are you currently doing? Currently, I am doing internship, HR internship. HR internship. Will it be okay if you can let me know the name of the company from where you are doing? Am I audible, Swati? Hello? Hello? Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So I was just wondering about if you could let me know, how many months it has been since you are doing into this internship? Ma'am, the internship is about 1 month. In this internship, we'll get to learn about the basic HR rules and the training process, recruitment and talent acquisition, all that things, to just get the basic knowledge of this field. All right. Okay. So Swati, since you told me initially that you have completed your graduation in BCom, Yes, so ma'am. I guess you must be skilled with your accountancy and other details. But since this position is for an HR executive, so I would really like to know that why you are interested in this position at our company. Yes, ma'am. Actually, I realized it later that I have an interest in management sector because I like to talk people and understand what they have, like their perspective regarding things, and that's why I choose this sector. Okay. So just could you let me know quickly that if you are shortlisted for this role, so as an HR, what skills you will bring for us in this for our organization that can be useful? Okay, so first of all, I focus on the candidate who can stay longer to the company so that they can put efforts to the organizational growth. And the second thing, efficient, the candidate should work efficient and effectively for the organization as well. Okay. Thank you for this one. If everything goes well and if you see Ma'am, I'm available as per your uh, okay. call or something. All right. So, So Swati, just let me know. So this is a full-time position and the work is from 9 a.m. to the 6 p.m. So since you already mentioned that you are doing an HR internship, so can you will it be comfortable with this schedule from 9 to 6? yes, ma'am, it is comfortable for me because I get the recording of the class and then I can go through it on the free time. Okay. So thank you so much, Swati, for this one. So once shortlisted, we will be conveying to via an email about your shortlisting. So in case your series selected, so we will be moving ahead with the round 2, which is going to be with our one of an HR. Okay, it's going to be a one-on-one interview round, and you have to be available on video call for the same. Are you comfortable? Yes, ma'am. Okay. So before we wrap up, do you have any questions for me? No, ma'am. Okay, great. So we will be reviewing the candidates and we will get back to you Okay. soon. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Let's stand. Okay. Okay. Let's take the first feedback from others. Then I'll give you.
is good. The questions are good. The way she asks, and from Swati, she'll start the introduction, but maybe she'll ask skills, what she have, like she have as well as what skills she have skills. Okay, Mhm. actually, maybe your voice is very breaking down there because of some network Okay, issue, maybe. is it coming now? Is it coming? Yeah, just try to turn off your camera and then speak. Camera off Yeah, करके ma'am. सब करो. Now is it coming? This is okay. Go ahead. Yeah, it's coming. It's fine. So for Swati, maybe she can tell more of the skills regarding the skills. Okay. Okay, Yatharth, maybe it's very difficult to can do that. Okay, let's move forward. It's very short time we have. So, Salma, So yeah, for Kashish, it was good. Okay, she was probing, she asked why you being a BCom, and so she probed that well because that was something the job hoppers usually HRs look into. So coming to Swati, I still feel that I love to talk with people. Even BCom people can talk with the people. If you really are interested, you can take the finance as well. Still people talk to you, but the answer could be more justificative, like maybe more into I'm interested into recruitment, yeah, I'm good at that, understanding a person's character or something like that might add more value to her answer, I felt. anybody else want to say? Pranjali, Preeti, Priyanshi, Sonam, Akash, Rashika, Kavya. Anybody else? Okay. So, my feedback for you is take it positively. पहले ही बता रही हूँ. Okay. So, I start with Kashish. Kashish, it was good when you start because you already want to have a positive point. Okay. The thing is, I'll be very genuinely, मतलब मैं बहुत confront हूँ चीजों को लेके. It's very important somehow reason you should communicate in English because people still in India judge you with your communication, how you are speaking. When we come to the standards, we can't give interviews in Hindi. Main है कि हाँ roles में हो जाता है कि somehow reason we need some roles, but usually people see how you communicate, right? कोई bias वाली चीज नहीं है, but yeah, people majorly focus on. ठीक है? So Kashish, your communication skills are good. So that's what the main positive feedback is you have that. ठीक है? आपकी probing अच्छी थी, but the thing is, try to be focused on कि आप जैसे पूछ रहे हो ना, probing कर रहे हो, it should be related to that. बीकॉम वाला पार्ट अच्छा था. ठीक है, आपने जो वेन यू वर आस्किंग फॉर द स्किल्स वो लिंक अप नहीं हो पा रहा था. मे बी इट फॉर द स्वाति साइड कि कैसे वो लिंक कर पा रहे हो आप. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन शुड बी लिंक विद दैट पोजीशन एज वेल. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप उन्होंने इंटर्नशिप का पूछा आपने, ओके, यू शुड आस्क फॉर द टाइमिंग्स. एंड द फर्स्ट मेजर थिंग यू शुड ऑलवेज आस्क इन एडवांस पहले ही कि लोकेशन क्या रहेगी आप. बिकॉज एट द एंड ऑफ द थिंग आप अगर आप लोकेशन पूछोगे तो इट विल बी अ जीरो अगर वो रिलोकेट के लिए ही नहीं है तो. फॉर एग्जाम्पल यू हैव इन्वेस्टेड योर 15 minutes एंड आफ्टर दैट यू रियलाइज दैट वो लोकेशन में ही कंफर्टेबल नहीं है, दे आर नॉट लाइक अप्रोप्रिएट फॉर वर्क फ्रॉम ऑफिस, और आपके पास रिमोट जॉब नहीं है, so you have wasted your 15 minutes, right? So it's very important you should ask those things which are mandatory. Location and first that you are available, and what are your availability. कि are you able to join fast? तो ये जो main questions है, because main candidate वो कैसे हायर होगा जब वो अवेलेबल होगा. Are you comfortable to come with? We are totally providing a work from office, right? This is the location we are working upon. Are you comfortable with that? तो वो चीजें पहले ही कर लो. This is the feedback for everyone. ये चीजें पहले ही कर लो बिकॉज ऑलरेडी यू हैव वेस्टेड 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको पता चलता है मैम नहीं मैं तो रिलोकेट में राजी ही नहीं हूँ, बट यू लाइक ओह नो क्या करा मैंने. ठीक है. तो कशिश इज जस्ट द थिंग कि सबके लिए सेट ऑफ पॉइंट्स है बिकॉज हम धीरे धीरे ही सीखेंगे, राइट? हमें नहीं पता होता, धीरे धीरे ही सीखेंगे. तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर माई साइड कशिश. ठीक है. बाकी इट्स गुड फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर टेकिंग इट, इट्स रियली गुड.
इवन मच मोर बेटर। आप नेक्स्ट टाइम, मेरे को पता है कशिश, सलमा एंड एवरीवन, ये थर्ड इंक्लूडिंग एवरीवन गोना रॉक। ठीक है। So, for the Swati, I have a feedback for you that कि वो same चीज I said here, like before also, a set of format is very important. तो हमें ना क्या होता है, we have to set of formats कि हम कैसे अपनी education, अपनी experience, अपने background को हम कैसे represent करें। ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम, यू नो, सबके साथ होता है ये स्वाति। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सेट ऑफ फॉर्मेट बनाएंगे और डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, वी आर एबल टू रॉक इन द इंटरव्यू। तब तो फिर हम ओपन बुक है हम लोग। ठीक है स्वाति, Yes, ma'am. पॉजिटिवली आपने अच्छे दिया, मेन है कॉन्फिडेंस, वो था आप में, डेली आप कहीं लैक नहीं हुए। वरना आई हैव सीन मेनी ऑफ द इंटरव्यूज, लोग चुप पड़ जाते हैं, वो सामने फिर एकदम से बहुत एक साइलेंट ऑकवर्ड सा वो हो जाता है, तो इट्स वेरी लाइक यू नो, बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि वियर्ड हो जाता है। बट एटलीस्ट कि अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहे थे तो यू आर एबल टू स्पोक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एटलीस्ट वो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी शो करेगा। Okay, we have 10 minutes now still, and I asked Prashant sir, if you have listened an interview, you can just give your feedback, please. एडिशनली एक पीछे से बैकग्राउंड वो भी आ गया, मैसेज भी आ गया, वी हैड अ सेशन फ्रॉम नेक्स्ट 4 p.m. so we have to wind up early. I know we are going to wind up with this feedback and pointers. So the thing is, कशिश ऑल गुड, थोड़ा सा आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा माइनर इम्प्रूवमेंट की नीड है। क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। ये नॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा चल रहा है अभी, एंड द थिंग इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके कशिश, अ, ठीक है, नो, ये जो कनेक्टिंग वॉइसेस होते हैं ना, तो ये थोड़ा आपके मोरालिटी को वहां पे लो शो करता है। सो आइदर, सॉरी, आपके कॉन्फिडेंस को, यूजिंग द इनकरेक्ट वर्ड, सॉरी फॉर दैट, आपके कॉन्फिडेंस को वहां पे लो शो करता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर आपको पॉज चाहिए तो आप अपने कम्युनिकेशन को, आप अपने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को इस तरीके से डिजाइन करो कि टेक अ पॉज, आइदर इट फॉर 2 or 3 seconds, बट इस तरीके से या ओके ऐसे वर्ड्स को ट्राई टू अवॉइड। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही थी, 2 से 3 चीजें आपको और करना चाहिए था, ग्रिल करना चाहिए था थोड़ा। उनकी एजुकेशन से रिलेटेड आपने पहले ग्रिलिंग करी, दैट्स गुड, मैं आधे पार्ट से अवेलेबल था सो मैंने ध्यान दिया, सो आपने वो किया, दैट्स गुड। एडिशनली प्लेस लोकेशन वाला जो था पार्ट, वो भी आपने किया, वो आपको पहले पूछ लेना चाहिए था, ये आपके लिए एक फीडबैक था। एंड फॉर स्वाति, इट्स वेल एंड गुड, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की और नीड है, वो आपका इंटरव्यू देते देते लगातार सही हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट, यू हैव टू कीप अ फॉर्मेट, Yes, ma'am. कि सबसे पहले आपको किस पे आना है, आपके अपने एक्सपीरियंस पे आना है, फिर एजुकेशन पे, फिर हॉबीज पे, फिर पर्सनल थिंग्स पे। अच्छा, एक चीज आप सबने मिसिंग करी है, ट्राई टू नो द फैमिली बैकग्राउंड, जस्ट क्विक एंड सिंपल, छोटा सा एक माइनर सा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि क्या होता है देन, ज्वाइनिंग टाइम पे मेरे ये बीमार हो गए थे, सो कैन वी डिले द ज्वाइनिंग प्रोसेस, जबकि जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि कैंडिडेट इज कंटिन्यूअसली गिविंग द इंटरव्यूज, सो वो ये चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम मिल जाए कहीं और पे इंटरव्यू देने का। ठीक है, तो थोड़ा सा जस्ट एक माइनर चेक, छोटा सा एक क्वेश्चन वहां पे आप पुट कर देना कि फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन है अभी आपके फैमिली में। ओके, so these are the all points from my side. So we are going to meet soon in the next session, जल्दी जल्दी, और सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना अपनी साइड से, जो भी एक सेट ऑफ फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस को भी और साथ में अपने आंसर्स को भी अच्छे से फ्रेम कर लेना। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम So, माय साइड। जो भी रह गए हैं, okay, so I'm really sorry for that. नॉट एन इशू, मेरी Are you साइड से saying कंप्लीट something, है। Prashant sir? नो, व्हाट आई एम Yeah. सेइंग, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, अब आप इसको क्लोज करके वाइंड अप कर दो। Okay. So, जो भी लोग रह गए हैं, we will try to cover them tomorrow, and we will do. That's why the reason I always say everyone that you should join earlier, because I don't want to. We should waste our 50 to 10 minutes over there. ठीक है? बाकी remaining one, अब आपको लोगों का task is that you have to prepare set of questions. ठीक है? जो भी basically आप journally पूछते हो,
और जो भी टेक्निकल टर्म्स के क्वेश्चंस पूछते हैं फॉर एनी पोजीशंस। और व्हाट वी कैन डू इज आप एक एचआर पोजीशन के ही निकालो, पता है क्या होगा, इट गोना हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दैट कि आप लोग इंटरव्यू में कैसे रिप्लाई करोगे व्हेन समबडी गोना आस्क यू अबाउट योर profession and you said कि my profession is different from that, because majorly people should like point it out कि what is the main reason behind it, right? Why are you switching into that position? So you gonna prepare for that also. So the task is for tomorrow is you have to prepare a set of questions. Okay. So like what ask, and also prepare ki how you should reply them, how you should reward them also. So both perspective you have to take. The first thing is set the questions. The second one is interview part as well. Okay. Thank you so much everyone. Have a nice day. Meet you tomorrow. Be prepared for your that. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Thank much. you, Thank ma'am. you. Okay. Thank you, ma'am.